अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आपको पता है पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात आपस में दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे के दुख सुख के साथी रहे हैं। पाकिस्तान में जलजिला आया या सैलाब आया तो बरतानिया ने हमारी काफी मदद की। उसके अलावा कुछ ऐसी भी सियासी बातें हैं जिन पर बरतानिया के ऊपर भी तनकीद हुई और पाकिस्तानी अवाम ने कुछ जगहों पर यह भी कहा कि शायद बरतानिया हमारा उस तरह से साथ नहीं देता या शायद उसका हमारी सियासत में भी अमल दखल है। मगर मोर और लेस बरतानिया हमारा एक बड़ा साइलेंट पार्टनर कह सकते हैं, खामोश साथी कह सकते हैं, और हमारी दोस्ती मुसलसल कायम रही है। इसी हवाले से जो भी बरतानिया के सफीर होते हैं पाकिस्तान में, उनकी पोजीशन बड़ी अहमियत की हामिल होती है। इसीलिए आज हमारे साथ एक्सक्लूसिवली मौजूद है मिस्टर फिलिप बार्टन, द न्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन माय शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपको क्योंकि हम जो रिसर्च की है उससे पता चला है कि आपको उर्दू भी आती है, तो बताएं कि कैसा लगा आपको पाकिस्तान? ये मेरे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि मैं पाकिस्तान में नया ब्रिटिश हाई कमिश्नर बना हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के साथ बहुत पुराना है। मेरी दादा पंजाब राइफल्स में पाकिस्तान में सन 1920s और 1930s में थे, और मैं पाकिस्तान सन 1994 पहली बार आया हूँ। ब्रिटानिया की पार्टनरशिप पाकिस्तान के साथ बहुत अहम है, और मैं इस पार्टनरशिप को और बेहतर बनाना चाहता हूँ। आपने कहा बेहतर बनाना चाहते हैं, you want to make it better, and there are many ways to describe a job. For instance, you can say it's a good job, you can say it's a bad job, it's a difficult job, challenging. Yet the words you used for your job in Pakistan, that is that of an ambassador, you said it's an absolutely dream job. Why? I mean, for me, I think there's two reasons. There's a personal one and there's a professional one. Mm-hmm. So on the personal level, as I hope people could understand from my little bit of Urdu, my grandfather was here in what became Pakistan in the 1920s and 30s, and my mother lived here as a young child before the Second World War. So for me, although I've never lived here before, I felt a connection, and there's a sense of coming home in a small way in having the job here in Islamabad. Secondly, on the professional side, the depth and breadth and importance of the relationship between my country and Pakistan means there's a really very serious and important job of work for me to do as the British High Commissioner. So both professionally and personally, it really is a dream job. And let me welcome you on behalf of Pakistani people, because as you said, it's personal and professional. In your recent interview, you've identified 3 areas where you have said that you are keen to make a personal difference. And these are trade, education, and security. Exactly how are you planning to make that difference? Well, look, on trade, our 2 Prime Ministers, Prime Minister Cameron and Prime Minister Nawaz Sharif, when they met here in Islamabad last summer, set us the target of increasing bilateral trade and investment to £3 billion a year by 2015. Yes. And that's a challenging target, but it's one I think we can meet, and I'm going to make it my personal priority, doing what I can to help meet that. And I would just highlight sort of 3 things I think that I can help with. One is making British business more aware of the opportunities to do business here in Pakistan. Secondly, it's making sure that, because it is a 2-way process, that Pakistani businesses can trade into Europe and the United Kingdom. And I think the so-called GSP Plus decision, which opens up more of the European marketplace to companies here, is very important in that regard. And the third is working in partnership with the government of Pakistan to make sure that the business environment here is as good as it can be. And so sometimes it'll be around breaking down hurdles to business. Sometimes it's around helping to make sure that the economy here really begins to grow and take off. And you also said, which is related to this, that I see many successful British businesses in Karachi. Other British companies can also have successful businesses in Pakistan, particularly in Punjab. And when you look at the recent trends, especially in the last 3-4 years, there has a huge chunk of British investment has gone to Punjab as compared to the other provinces. Any particular reason why the focus on Punjab? I mean,
we've had a strong partnership with the Chief Minister and the government of the Punjab over the last few years. And exactly. And I think we've, in partnership with his administration, been able to have some really positive impacts in fields like education. But we don't, and I'll give you the wrong impression, we don't work exclusively with the Punjab. We work across the country, and we are, for example, working very closely with the new administration in Khyber Pakhtunkhwa, over working with them to improve the delivery of services in fields like education and health to the people of that province. So yes, we've done a lot of work in the Punjab, but it's not just been about the Punjab. And you've also identified, you yourself mentioned the £3 billion target by 2015, which is a huge target. And then again, you yourself have highlighted the security issue. How do you think you can convince people to come to Pakistan in the present situation? I mean, I think partly it's about pointing to the examples we've already got of very successful British businesses here. I mean, I think there's over something like 100 companies operating in Pakistan, and I mentioned Karachi because I had just been there, and I'd been in the Dolman Mall and seen for myself, you know, what are, for me as a British person, you know, high street stores that I expect to see on my high street: Debenhams, Mothercare, Next. And I think that example is something which other British companies can see, will say, you know, this is a country where clearly other British companies are doing good business, have invested, and probably we should look at the same opportunities. Pakistan's present government is working at a different following a different roadmap than the previous government, and that is to negotiate, to talk with the Taliban. How do you see this as a successful attempt to bring security? I mean, I think for me as the new High Commissioner, I mean, the first thing I should say is that I'm very, very conscious of the sacrifice that Pakistan and Pakistanis have made in recent years in the face of terrorism. That's important to my country because I think we see very much our security is bound up with the security of this country. In terms of your question about talks and the policies of this government and the previous government, I mean, to be honest, I think it is for the government to decide the approach they want to take, rather than for me to say this is a good or bad idea. But the reason I asked you this question was, first, as you said, it's good to have security for all reasons, but also every time the political parties in Pakistan that support the dialogue or negotiations, and the analysts who support that, they always give example of the IRA, Irish Republic Army, talking to the British government. Do you think there's any comparison between the two situations? Look, I mean, the first thing I'd say is all situations are different, and they have circumstances both in time and history and what has happened and how particular use of violence has come about and the reasons behind that violence. So I don't think you can have exact parallels. That said, I do think that the peace process in Northern Ireland can provide at least some lessons, not just for Pakistan, but for other places where there has been violence. And at the end of the day, what are we trying to do here? We're trying to do the same thing that's happened in Northern Ireland, and that's make sure that the people of this country have a peaceful and secure future. So that maybe there are some lessons from Northern Ireland, but I think the parallels are inexact. The parallels aren't exact, right? Exactly. Coming back to the issue of security, I know Britain worked hard at making their laws tougher. At present, this has been discussed a lot, that there are more than 200 foreign criminals who successfully challenge deportation on human rights grounds annually, with around 90% relying on the right to private and family life, set out under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Now, the new Home Secretary is proposing a change to the government's immigration bill, which would allow British terrorist suspects, only the suspects, to be stripped of their citizenship, even if it leaves them stateless. Don't you think it's a bit tough? I mean, you're talking about a policy which is being proposed by the government that I represent, so I think you'll understand that actually I'm not going to describe it as tough or as anything else. I think what I would say is that, you know, in the United Kingdom there's quite a strength of feeling about the connection between our immigration policies and our ability to defend ourselves from those who might want to commit acts of violence. And the government, and there's both parts of the government, so it's a coalition, as you know, not just the Conservative Party, are keen to look at ways in which we can make the UK more secure.
should we think about bringing in similar legislation to Pakistan? Because this is one place where we are lax at the moment. Well, I think you need to look at the situation here and judge where the terrorism is coming from and what sort of measures will help reduce it. And so I don't think there's a parallel with necessarily the action we've taken in the UK. Where we are working with the government is discussing with them the kinds of strategies that we've used in the UK, giving them advice and collaborating with them as they draw up their own counter-terrorism strategies. And we're also working to assist in very practical ways. So, for example, we've been doing training around how you strengthen the criminal justice system here so that terrorists can be investigated, prosecuted and successfully found guilty. And so we're trying to build capacity in that area to make sure that international best practice applies here too. And we're again looking also at sort of assistance in some very practical areas like how you counter improvised explosive devices and so on. Coming to the political side of the things, one issue for which Britain has been highlighted a lot or has been in the news is because of the case of a British citizen, Mr. Altaf Hussain, who runs a very popular party in Pakistan, which is the MQM. It is a very important political party. It says it represents the middle class in Pakistan. It has its 25 members in the National Assembly and 52 members in the Sindh Provincial Assembly. And the question which has been asked again and again is that does the British law allow a British citizen to run a huge political setup in a foreign country? I mean, you'll know that in the UK we have very robust laws, we have very robust arrangements. It's actually not for us to say whether or not someone should be running a political party in another country. That's about the politics of this country. As long as the individual is abiding by the laws of the United Kingdom, they're free to do whatever they wish. So there's no law as such? There's no law preventing you running a political... There's no law in the UK to stop you being involved in politics in another country. Coming back to Mr. Altaf Hussain, he recently has accused the British government and agencies, and I want to say exactly what he said so I don't misquote him. He has said that his life is in danger while living in the UK. He said that the British establishment could easily take him down and no one would know about it. He also said that there is an international conspiracy against him, possibly hinting perhaps at the British government or being involved in it as well. So exactly what is going on in Britain that he has to give these statements? Well, I don't speak for him, so I suggest you ask him what lay behind his statements. I mean, what is going on in the UK, but it is a matter for the police, not the government, is a police investigation. As a British citizen, he is appealing for help or perhaps pointing to a danger which is heading towards him. Do you think his life is in danger? Let's be straight. As I say, I think you have to ask him what lies behind his statements. You know, what is going on in the UK is a police investigation. Any details that you could give us about what is the case that's going on? What is the police investigation? You know, and I know you lived in the UK for 12 years, so you'll know very well that in the UK we have complete separation between the government, who I work for and represent, yes, and the police and the prosecuting authorities. So it's a matter for the police rather than for me. So the British government has got nothing to do with the case of Altaf Hussain? We have nothing to do with the police investigation. No, we have nothing to do with that. And this is something, a message that needs to be sent to him as well, because he keeps on bringing the British government. I'm pretty sure he's well aware of our position. Okay. Now coming to the security issues again, one other issue, a controversial issue, is that of the drone attacks. And Pakistan has consistently said that drone attacks are not productive when we're having peace negotiations. But recently, there has been an article in one of the US newspapers that the US is now thinking to cut down its drone strikes. What is your opinion about the use of drone attacks? I mean, for me, it's very clear. This is a matter between Pakistan and the United States. It's not a matter for the United Kingdom or as me as their representative here in Pakistan. Even as an ally in the war on terror, a very important ally in the war on terror, because US believes that this is a productive way of curbing terror. But this is a matter between Pakistan and the United States. It's not a matter for
for the United Kingdom. Coming back to the business side now, you also plan to do a lot, as you said, in education. What are the plans for that? So we've been working, as you noted, particularly in the Punjab, and we're also working in other areas. And what we are looking to do is produce some really specific outputs around increasing enrolment into schools, increasing the number of teachers, and increasing the qualities of the education delivered. So I was able in Lahore earlier in the week to go and visit a school and see, if you like, bottom up exactly how our top-down assistance has been working. And I was very encouraged that when I was taken round the classrooms and I talked to the teachers about the work they were doing, the lessons they were delivering, they had very clear plans. It was a very structured, organised and effective education that's being delivered to young people. And I think that's very important, because I think the way in which young people, students, school children are educated in Pakistan is very much bound up with the future of the country. Yes, and indeed education is very important. And while we're talking of education, there are about 30,000 students from Pakistan in England who consistently, some of them complain that the visa restrictions do not allow more of them to go there. I mean, I think my message would be on this, that we are very much open to bona fide students who want to come to what I think is a world-class set of higher education institutions in the UK. Yes. What has happened over the last few years is if you like, a regime put in place to make sure that those who weren't coming for the primary purpose of education, who were coming for other reasons, can no longer get visas. And to be honest, I think in some cases, young Pakistanis were being misled by the supposed institutions they were going to, and then weren't getting their money's worth in terms of education. So we have tightened the rules in that regard. But if you're a bona fide student wanting to study at one of our institutions, you absolutely should take that forward. And we're very much open to those students. Who are the genuine students, Exactly. who go to the genuine universities. Exactly. And coming to that, I know there has been the whole scandal about the fraudulent universities in the UK. But the cost has gone up for applying and to study in the UK. Any particular reason for that? Well, I think we've found that education has got more expensive in general, and that's a global phenomenon. If you look in, say, the United States, the costs have gone up considerably, and they are already much, much higher than in the United Kingdom. So I think for the quality of education you receive, our higher education is still extremely good value for money. That said, I recognise that these aren't small sums of money. What other activities do you think you will be doing while you're here? Look, I mean, I think there's some important issues over the next year to do with regional issues. Afghanistan 2014 is clearly a big year. I think for me personally, as the High Commissioner responsible for the relationship between our two countries, I'm very, very keen to see an increase in the people-to-people links, cultural relations, building on what I know has been a very successful campaign by the High Commission with the title of Celebrating Connections, where we've tried to illustrate the way in which our two countries are connected through the very prominent British Pakistanis that we have in my country. Yes, and you spoke about British Pakistanis yourself. How important are these British Pakistanis in the larger economy of Britain? I know there are a lot of them who watch my show and they would want me to ask you this question. For me, they're vital, and I mean, one of the things that I've enjoyed over the last few months in the UK as I prepared for this job was getting to know more of the British Pakistani community, the very successful parts of the community that I didn't know before, and they are a big part of our economy, and I think they're a big part of the economy here. And I think what I'd like to do is try and use them as a way, also going back to one of your first questions about trade and bilateral trade, use them as a bridge on the commercial side and tap into that as we try and build up the bilateral commercial relationship. And where do you look at the future of Pakistan and Britain's friendship? I see it only getting stronger and deeper. Thank you very much for joining me on the show. It's been a pleasure. आप सुन रहे थे ब्रिटिश एम्बेसडर की बातें, आपने उनकी उर्दू में भी बातें सुनी, इसलिए उर्दू में ही आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं. Now let's get back to the studio.
वेलकम बैक नाज़रीन। आज की एक और इंतहाई अहम डेवलपमेंट परवेज मुशर्रफ साहब के मुकदमे के हवाले से थी। बार बार कसूरी साहब हमें कहते रहे कि आज एक सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज को इतना बड़ा सरप्राइज नहीं था क्योंकि एक बार फिर परवेज मुशर्रफ साहब अदालत में पेश नहीं हुए। उनके केस में दलाइल देते हुए उनके वकील अनवर मंसूर का कहना यह था कि मुशर्रफ के मुकदमे को मिलिट्री कोर्ट पे मुंतकिल करने से मुतालिक भी फैसला किया जाए। मुशर्रफ की बैरून मुल्क इलाज की दरख्वास्त को बगैर सुने खारिज कर दिया गया। हमने बाज़ाब्ता तरीक़ेकार के तहत दरख्वास्त जमा कराई थी। हम पहले से अदालत के दायरे इख्तियार पर बहस कर रहे हैं। अदालत पहले अपने इख्तियारात का तयन करे। जजेस की जानिबदारी से मुतालिक भी अभी फैसला नहीं किया गया। अभी तो दलाइल मुकम्मल नहीं हुए थे कि अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आईनी तरीके से और कानून के मुताबिक अदालत की तश्कील पर इतराज किया था। ज़ाब्ता फौजदारी समेत कोई दूसरा कानून इस मुकदमे पर लागू नहीं हो सकता। जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये यकीन दिलाया था कि वो यकीनन आकर अदालत का सामना करेंगे पाकिस्तान, मगर अब कुछ अरसे से वो अदालत में पेश ही नहीं हो रहे। उनको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो मुजरिम साबित होंगे या नहीं होंगे, ये तो बात की बहस हो गई। अब इस वक्त पाकिस्तान में यही बहस है कि परवेज मुशर्रफ आखिर को कभी अदालत आएंगे भी कि नहीं। 18 फरवरी इज द नेक्स्ट डेट। हम इस पर बात करेंगे। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर अमजद रहनुमा APML। वेरी वार्म वेलकम टू यू। और हमें ज्वाइन करे हैं सजाद मीर साहब, सीनियर सहाफी तज्जियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वेरी वार्म वेलकम टू यू एज वेल। मीर साहब, आपसे ही आगाज करते हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं अब हम ये सेफली कह सकते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब आना ही नहीं चाहते अदालत? असल में जी वो हिकमत अमली इख्तियार किए हुए हैं। हिकमत अमली ये है कि अदालत से खुद को बचाया जाए। उनको ख्याल है कि पहले उन्होंने कोर्ट फेस किया है, बुक्सी केस में, दूसरे केस में कोई उतने घबराए नहीं है, लेकिन इस वक्त उन्हें शायद गुमान ये है, अंदाजा ये है, इसके नतीजे के तौर पर सूरत हाल पैदा हो सकती है। उसमें उन पर गद्दारी से जो चार्जशीट दायर होगी वो शायद उसके बाद जो प्रोसेस चले वो बहुत मुश्किल है। वो अपने आप को इस मैसेज से निकालना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में टीम तो उनकी बहुत अच्छी है। सैफुद्दीन पीरजादा से लेकर जितने भी लोग हैं, हंगामा करने वाले भी हैं, शोर मचाने वाले भी हैं, कानूनी नुकात उठाने वाले भी हैं, बड़े लेवल पर कानून की हाकिमियत के हवाले से कोई बड़े दलाइल लाने वाले सैफुद्दीन पीरजादा भी मौजूद हैं। और यकीनी तौर पर वो बहुत से ऐसे नुकात पैदा कर सकते हैं और करते रहे हैं। पाकिस्तान की कम अज कम 50 साल तारीख में उनकी सब बातें मौजूद हैं जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुशर्रफ अवॉइड कर रहे हैं और मेरे ख्याल में वो जो कहते हैं मैं डरता वरता कुछ नहीं हूँ, इस वक्त कम अज कम वो डर रहे हैं और उनको लगता है कि ये शायद मुश्किल काम होगा पेश होना और पेश होकर एक चार्जशीट का मुकाबला करना, और अगर चार्जशीट आयड हो गई तो शायद मुश्किल सूरत हाल है। इस वक्त वो एक तरह अपने आप को फौज की पनाह में समझते हैं, समझते नहीं है भी। कौम भी इस वक्त महसूस कर रही है, लेकिन फौज का भी एक हद है, एक हद के बाद वो आगे नहीं जाएंगे और एक दिन शायद उन्हें पेश होना पड़े। उनका ख्याल है कि पेश होने से पहले अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, सियासी अंडरस्टैंडिंग जहां हो जाए, जहां जो उनका ख्याल है उनके कोई दोस्त करवा दें, फिर वो पेश हो तो दूसरी बात बनती है, वरना ये कोई मुझे नजर नहीं आता कि वो हिम्मत कर पाएंगे अदालत में आने। राइट, मेरे साथ डॉक्टर अमजद भी मौजूद है, मगर इससे पहले कि मैं उनकी साइड सुनूं, साइड ऑफ द स्टोरी, मीर साहब आपने खुद कहा कि वो इस वक्त क्या समझ रहे हैं। हमने जो माजी में पिछले कुछ साल से देखा, बहुत सी बातों में ऐसे लगा, बल्कि इवन जब वो प्रेसिडेंट भी थे परवेज मुशर्रफ साहब के, उनको शायद हकीकत का इदराक नहीं हो रहा, या उनके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हकाइक बताना ही नहीं चाह रहे। क्या हम कह सकते हैं इस वक्त भी परवेज मुशर्रफ साहब ऐसे तकियों पर, ऐसी जगह पर तकिया करके बैठे हुए हैं जहां से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला? असल में मैंने लिखा था जी, कहते हुए शर्म आती है, यहाँ के बेवकूफ आदमी फंस गया है। उन्हें पूरी दुनिया ने कहा था कि पाकिस्तान न जाएं, उनके अदारे ने कहा था, फौज ने कहा था, उन्होंने सऊदी से राब्ता की कोशिश की थी, वहां से भी पूरा जवाब ही मिला था। अमरीकियों से उनको कोई ऐसी पॉजिटिवली बात नहीं आई थी, ये उन्होंने कहा था सारी बातें, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यकीन था कि वो जाएंगे तो कुछ ना कुछ कर पाएंगे। ये बात वो किन लोगों के कहने पे कर रहे थे, किसके बिरते पे कर रहे थे, कौन उनको ये लाइन दे रहा था, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये हकीकत है कि फैसला तो उन्होंने किया ना, और उसमें आप फंस गए हैं और उनको अच्छी तरह मालूम है कितने फंसे हैं। उनके जवाब पैगाम बहुत जराए के जरिए मुख्तलिफ जगहों पर जाते आते हैं, उसमें वो यकीनी तौर पर मुल्क से जाना चाहते हैं। ख्वाहिश उनकी ये है कि वो इस तरह जाए कि लगे कि उन्होंने अपना मुकदमा जो है वो जीत लिया है और जीत कर बाहर जा रहे हैं।
दोनों बातें साथ साथ चलती दिखाई नहीं देती। शायद कोई एग्जिट स्ट्रेटजी उन्हें मुयस्सर आ जाए, लेकिन इस ख्याल से कि वो बिल्कुल बरी होकर यहाँ से चले जाए। अगर अमेरिका भी करे तो अमेरिका के ये रेमंड डेविस नहीं है, तो वो यहाँ तक करे, अमेरिका डंप भी कर देता अपने लोगों को। उसकी मुबारक ही बैठे हुए हैं, आज भी अभी उनकी खबरें थी। फिलिपाइन के सदर, एक मिसाल नहीं, मनुष्य की मिसाल दीजिएगा, तो बेशुमार मिसालें हैं कि अमेरिका अपने चहेते आमरों को कहूंगा मैं, कोई मुझे कहने में बात नहीं है, वो बाद में डंप भी कर देता है। रजा शाह पहल भी देख ले हमारे पड़ोस में, और उससे उसे जरा नजामत नहीं होती। सियासत है भाई, जाती दोस्तियां नहीं है, सियासत है, इन्हें इसका इदराक होना चाहिए था। अब घर बिक रहे हैं, लंदन में सुना है 30 लाख पाउंड का एक घर बिक गया, 4 लाख पाउंड का बिक गया। अब सवाल उठेंगे ये कैसे बने थे, कहां से आए थे? तकरीरें करके इतने पैसे नहीं आते, इसका जवाब पेश किया जाए। ना कोई अल्ताफ हुसैन है वो कि लोगों ने इतना चंदा दे दिया होगा जिसका उन्होंने घर खरीद लिया होगा। ये सारे सवालात हैं जो अब इसी मुकदमे के साथ उठे हैं, और मेरे ख्याल में और बहुत से उठ सकते हैं। बहुत सारे सवाल तो उठ सकते हैं डॉक्टर अमजद, और उठने पड़ेंगे, और यकीनन बहुत जगह पे, और इस बात पे क्रेडिट भी मिलता रहा परवेज मुशर्रफ साहब को कि बड़े बहादुर हैं वो, लेकिन अब बहादुरी नहीं दिखा रहे। देखिए, ये थैंक यू सो मच। पहले तो मैं वो मीर साहब ने भी बात की कि शायद अमेरिका उसमें कोई रोल अदा कर सकता है या करना चाहिए था, या वो अब नहीं करेगा। तो बात यह कि हम तो उनकी तरफ देख ही नहीं रहे, और ना ही हमें जरूरत है कि कोई उनको बाहर से आके सऊदी अरब या अमेरिका को रेस्क्यू करेगा। आप देखें कि जब मुशर्रफ साहब आए थे तो खुद अपनी मर्जी से आए थे। उसकी दो वजूहत ये कि इनकी जाती और दूसरी सियासी। जाती ये थी कि वो ये चाहते थे कि जो मुकदमात उनकी एब्सेंस में उन पर कायम किए गए हैं और उसमें उनको इश्तिहारी तक बना दिया गया, तो वो ये चाहते थे कि मैं अदालत में पेश हूं और अपने आप को बरी कराऊं कि भी मैं गिल्टी नहीं हूं। एक दैट वाज द बेसिक, और उसके बाद वो फ्रीली पाकिस्तान आ जा सके, सारी उम्र अपने आप को बाहर वो नहीं रख सकते। दैट वाज हिज पर्सनल। लेकिन किसने उनको ये कहा था कि आप वापस आए? किसने उनको ये कहा था कि ये अदालतें आपके साथ कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग कर लेंगी? किसने उनको ये कहा था कि आपको बाइज्जत? उनको पता नहीं था कि यहाँ अंडरस्टैंडिंग तो मेरा ख्याल है कि हमें करनी भी नहीं चाहिए अदालतों से। अदालत का तो काम है जो सही केस हो उसके मुताबिक उन्होंने फैसला करना। अगर हम पहले से अदालत से ये कहें कि आप इल्जाम लगा रही है अदालतों के ऊपर, नहीं, हमने इल्जाम नहीं, अदालतों पर हमने इल्जाम नहीं लगाया। देखिए बात ये, हम अदालतों पर इल्जाम नहीं लगाते। आप ये देखें, मुशर्रफ साहब 7 डिफरेंट कोर्ट में पेश हुए हैं, ठीक है, 7 डिफरेंट। उसमें मजिस्ट्रेट की अदालत भी है जहां उन्होंने सरेंडर किया था, उसमें एटीसी की 3 कोर्ट्स हैं, उसके अंदर 2 हाई कोर्ट्स हैं, सब में वो साथ में पेश हुए, खुद जाके पेश हुए मुकदमा। तो अगर उनको डर होता तो उन 7 में भी ना जाते। उनमें 3 केस तो ऐसे हैं जिसमें कत्ल का इल्जाम है, जो कि मतलब वो भी कोई छोटा नहीं है इल्जाम। तो मैं ये समझता हूं कि अब ये इतराज अगर लगाया अदालत पे तो वो इसलिए लगाया कि वो 7 कोर्ट एक प्रॉपर सिस्टम के तहत ऑपरेट हो रही हैं। ये अदालत चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब ने जाते जाते अपनी मर्जी के जज ढूंढ के लगा दिए जिनके वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कोई अपनी मर्जी का फैसला कर सकते हैं। अदालत की जानकारी भी अभी आते हैं, लेकिन पहले मुझे बताएं, आप खुद बार बार ये कह रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब आए ही अदालतों का सामना करने थे, तो फिर अब आके कहना है कि ये अदालतें देखिए, उनको नहीं पता था कि ये कौन सी अदालत है? यही तो मैं सवाल आपसे बार बार कर रही हूँ कि उनको पता नहीं था पाकिस्तान में कौन कहां पर है, क्या होगा, मैंने क्या किया है, मुझसे क्या क्या सवाल होंगे। श्योरली कोई होमवर्क उन्होंने किया होगा। क्या सोच कर आए थे? ना तो मुशर्रफ साहब को और ना ही हमें ये अंदाजा था कि इस तरीके से ये अदालत बनाई जाएगी और इस अदालत को मैंडेट ये दिया जाएगा कि आप उनको जबरदस्ती बुलाएं और उनको फर्द जुर्म आयद करें और उनको अरेस्ट करा दें। तो ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। प्रोसीजर है, जो भी नहीं नॉर्मल नहीं है। इट्स नॉट ए नॉर्मल। आप अगर कहें ना अदालतों की अंडरस्टैंडिंग, तो वी बिलीव ऑन जस्टिस, और अदालतों के निजाम को हम भी उनको एंडोर्स करते हैं। अगर 7 अदालतों में वो आए हैं और पेश हुए हैं और वहां पे उनकी जमानतें हुई हैं, तो वो मतलब इत्तेमाद का इजहार है। नहीं था कि आर्टिकल 6 तक बात चली जाएगी। आर्टिकल 6 भी हो सकता था, लेकिन आर्टिकल 6 करने के लिए कोई इतनी जल्दी नहीं थी कि वो इफ्तिखार साहब जाते हुए ऐसे जजेस। वो हमने तो कोर्ट की तश्कील पे इतराज किया, वो रिजेक्ट कर दिया गया। हमने 31 जुलाई 2009 के फैसले को नजरसानी के लिए कहा गया तो टाइम बार्ड कर दिया गया। हालांकि नवाज शरीफ का फैसला 9 साल बाद खुद चीफ जस्टिस पुराने जो थे उन्होंने बुला के उनको कहा जी वो खत्म है फैसला, तो आप आ जाए पाकिस्तान। तो बात यह कि इंसाफ वो है जो सबको मिले और इंसाफ वो है जो नजर आए, ये नहीं हो। तो ये एक सिलेक्टिव सी ये जो कोर्ट इन्होंने बनाई है उस पे हमने रेज किया। अभी आप देखें मंसूर साहब ने कितने पॉइंट रेज किए हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में थे और हमें बीच में शामिल भी नहीं किया गया। इस्तगासा की बात सुनी गई, मेडिकल रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी गई, ECL में नाम उनका निकालने की इजाजत नहीं दी गई, और यहां तक के
फौरी तौर पे उनके गिरफ्तारी के वारंट तक जारी कर दिए गए। तो ये जो चीजें मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने ये कहा है कि इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि वो आ ना सके अदालत, बट यस आई हैव गॉटन योर पॉइंट। और मैं चाहूंगी मीर साहब इस पर कमेंट करें। जानिबदारी का मुजाहरा करें अदालतें, एक दफा और एग्जेप्शन ही मिल गई है किस्म की परवेज मुशर्रफ साहब को, अब आगे फिर दोबारा पेशी पे बात चली गई। कौन जानिबदार है यहाँ पे मीर साहब? देखिए बात सुने, ये तो बातें होती रहती हैं जजेस के बारे में। वो हमारी एक खातून है, नाम ही ले लेता हूँ, आसमा जहांगीर, उसने ये तक कह दिया कि 2 जजेस के बारे में तो बार रूमों में बातें। उन्होंने तो इसको कैंगरू कोर्ट भी कहा है, ये भी जरा सुन। कैंगरू कोर्ट के उनको मैंने नहीं आते ना जी, कैंगरू कोर्ट कह तो दिया है, कुछ भी कह दिया है कि उनको। असल में ये जो वकील है ना बहुत सारे, ये चाहते हैं कि इनके जो चैम्बर्स है ना उसके लोग ही जज बन के जाए। अब जितने जज, अब जाहिर है कि जब जजों की सिलेक्शन होनी है तो उसमें बहुत सी कंसिडरेशन होनी है। एक प्रोसेस तय हुआ था, उस प्रोसेस के तहत बहुत से जज आए, बहुत से जजों के बारे में बहुत से लोग लेके बैठे हुए थे, उन्होंने वकला की तहरीक में हिस्सा लिया था। क्योंकि उन्होंने वकला की तहरीक में हिस्सा लिया था इसलिए उसका मुआवजा उन्हें यह दिया जाए कि उनके चैम्बर्स के जज जो है उनको मुकर्रर किया जाए। शरीफुद्दीन पीरजादा की क्या बात अजीम गिनी जाती थी? यही गिनी जाती थी ना कि उसके चैम्बर के काम करने वाले या जिसके जेर असर लोग जो थे वो ज्यादातर जज मुकर्रर हो जाते थे और जज मुकर्रर किए जाते थे, यानी कि उसके आदमी जज बन के बैठ जाते थे और उन पर चौधराहट चलाता था। सईदुस्समान सिद्दीकी के बारे में यह तक कहा गया कि उनका जूनियर टाइपिस्ट है, और उसका रिजल्ट क्या निकला जब उन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाने से इनकार किया और अपनी एक इंटेग्रिटी शो की, सब लोग हक्का बक्का रह गए। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि हर आदमी अपनी पसंद का जज ढूंढता है और हर आदमी चाहता है कि जो जज उसकी पसंद का नहीं है, बल्कि उसके चैम्बर से नहीं गया उठ के, तो वो जज नहीं है। एक जमाने में मुझे याद है बेनजीर आई थी तो उन्होंने 8-9 दिन हाई कोर्ट के जज मुकर्रर किए थे, तो हम मजाक बहुत से लोग करते थे, लेकिन मैं भी उनमें शामिल था जो कहते थे कि बच्चे, एक साथी ने कहा, उन्हीं में से 9 में से एक ने कहा कि मैं तो डबल बेंच पे सुन रहा हूँ, सिंगल बेंच में केस सुन रहा हूँ, बाकियों को डबल बेंच पे छुपाया जा रहा है। लेकिन उनमें से 2 कम से कम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। उनकी शोहरत कोई खराब नहीं थी, उनकी शोहरत अच्छी थी। हमने जो जजेस की बात की है, हमने को कई 100 जजेस है मुख्तलिफ कोर्ट्स में, हमने कभी किसी की बात की है? हम 7 कोर्ट में पेश हुए, हमने किसी जज की बात की है? हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की है? मेरे भाई आप एक चैम्बर की बात लेके बैठ गए। हमने सिर्फ स्पेशल कोर्ट की तश्कील और वो जजेस जो के पीसीओ इफेक्टिव है उनको लगाने पे बात की, और चीफ जस्टिस इफ्तिखार के अपॉइंट करने पे इतराज किया कि इतने जल्दी में उनको क्या जरूरत थी कि रिटायर होने के चंद दिन पहले वो ये करके चले गए। अभी तो ये जो सारा सिलसिला है पार्लियामेंट में पास भी नहीं हुआ अभी बिल, और उसके बाद कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है कि मुशर्रफ साहब को लाए, कन्विक्ट करें और उसके बाद सारी उम्र के लिए नाअहल कर दे या उनको सजा दे। तो ये इसका जवाब मैं लेती हूँ, लेकिन ये बात तो फिर तय है कि वो नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? आना चाहते हैं, आएंगे। देखें आपको अगर कोर्ट में क्या सरप्राइज दिया उन्होंने? क्या सरप्राइज मिलेगा आपको? सरप्राइज मिलेगा? सरप्राइज तो कसूरी साहब ने कहा, मुझे नहीं क्या पता क्या सरप्राइज है, बट दिस इज फैक्ट। कल भी परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा था कि मैं खुद अदालत में पेश होकर अपना मुकदमा खुद पेश करना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक। लेकिन डॉक्टर्स ने और वकला ने उनको ये कहा कि आपकी हालत इतनी अच्छी नहीं कि आप वहां जाएं, और आप एक्सपेक्ट भी ना करें कि आपको वहां से जस्टिस मिलेगा, क्योंकि उन्होंने फौरी तौर पर आप पे वो फर्द जुर्म आयद करनी है, चार्जशीट देनी है, और वो कोशिश करेंगे आपके खिलाफ कोई भी इंतहाई इकदाम का। तो आपकी सेहत इस चीज की इजाजत नहीं देती, आप माइनर अटैक से बड़े अटैक पे जा सकते हैं। तो फर्स्ट हमें आपका ट्रीटमेंट करने दे, 2-4 दिन लेने, एंड ही कैन कम ऑन द अनोखी मिसाल नहीं कायम कर रहे परवेज मुशर्रफ साहब। कल को पहले ही मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी अपने दिखाया था कि किसी और ने अपनी दरख्वास्त दायर कर दी कि मेरे साथ वही सलूक किया जाए जो परवेज मुशर्रफ साहब के साथ हो रहा है। लोग तो कह रहे हैं अदालतें आपको फेवर दे रही हैं, इतनी छूट दे दी उन्होंने अभी तक आपको। देखो, हमने तो किसी अदालत के खिलाफ तो बात नहीं कर रहे, हम तो एक पर्टिकुलर इस कोड की बात कर रहे हैं, जो मैंने अभी अपने भाई मीर साहब को भी कहा। हमने तो इसकी तश्कील पे, या इन्होंने जो पिछले 1 हफ्ते में फैसले किए हैं या ऊपर नीचे ऑर्डर पास किए हैं, और इस तरह की बातें सुनी जाती हैं। आने का डर लगता है तो आपको लगता है अदालत जानेदार है। फैसला तो अभी हो ही नहीं सकता ना। देखिए, इस पे अभी फैसला नहीं हो सकता, ये इतना सिंपल केस नहीं है कि परवेज मुशर्रफ साहब आए तो आप फैसला कर देंगे। उसमें जो उनके साथ लोग हैं उसका भी देखना पड़ेगा, फिर अदालत का दायरा इख्तियार भी देखना पड़ेगा, फिर वो एक आर्मी उस वक्त चीफ थे जब उन्होंने ये इकदाम किया, वो भी देखना पड़ेगा कि क्या इस अदालत कर सकती है या नहीं कर सकती। तो बहुत सारी अवामिल है जो मंसूर साहब ने मेंशन किए। तो पहले कोर्ट इन चीजों की क्लियरेंस या इन चीजों पे जो पेश रफ्त हो जाए, तो 18 फरवरी डेट दी, वो आ जाएंगे 18 फरवरी को इंशाल्लाह, तब तक सेहत भी बेहतर हो जाएगी।
چلے اس وقت تک صحت بھی بہتر ہو جائے گی. میر صاحب اب اگر ان کو صرف اس خصوصی عدالت پر اعتراض ہے تو کیا اس کی تشکیل نو کے بارے میں سوچا جائے پھر؟ اصل دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صحت ان کی بہتر ہو جائے گی, اللہ کرے بہتر کرے, دعا ہے ہماری. ایسی صحت ہے کیسے ٹھیک ہوگی؟ اینجیوگرافی تو کروا نہیں رہے اور اپنے ادارے کا اسپتال ہے, وہ اپنے فوج کے اسپتال پر ٹرسٹ نہیں کر رہے, اور وہ ایک بہترین یعنی کہ ڈاکٹرز کا ہاسپٹل ہے, تو معمولی اسپتال نہیں ہے. فوج نے بڑی محنت سے یہ ادارہ بنایا تھا, وہاں وہ اینجیوگرافی تک نہیں کرا رہے, اور ان کی ٹریٹمنٹ اور کیا کس طرح کی ہو رہی ہوگی؟ اور ٹریٹمنٹ تو ہارٹ کے معاملے میں صرف ریسٹ کی ہوا کرتی ہے. تو کوئی اتنی میرے خیال میں یہ اگر بات دیکھی جائے, اچھا عدالت پہ جو انہیں اعتراض ہے تو عدالت فقار چودھری کی نہیں ہے یہ, بلکہ اعتراض یہی ہوا تو حکومت مقرر کی ہے. اعتراض یہ ہے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت باعث ہے جس نے بڑا اقدام کر کے ایک عدالت کو مقرر کیا ہے. اس حکومت کی عدالت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. پھر قوم سوچے گی کہ کون سی حکومت آئے جو عدالت بنا کے دے ان کو, اور جو ان کی پسند کی عدالت. حکومت کی تو عدالت ہی نہیں ہے, کیا بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو دیکھیں عدالت حکومت نے نہیں بنائی. عدالت جو رجسٹرار نے خط لکھ کے ججز کے نام حکومت کو بھیجے تو انہوں نے نوٹیفائی کر دیے, تو عدالت جسٹس افتخار صاحب اپنی مرضی کے ججز کی بنا کے چلے گئے, ان کو ڈائریکشن دے کے چلے گئے. نواز شریف پہ بھی الزام لگا چکے ہیں قصوری صاحب. میاں نواز شریف کو تو جو انہوں نے ایک ریکمنڈیشن دی وہ وفاقی حکومت نے اس کو نوٹیفائی کر دیا. ہم اس پہ بات نہیں کر رہے. 5 جج انہوں نے بھیجے اور کہا کہ بھئی بچے کام یہ حکومت کے کرنے کا ہے. حکومت نے اسی 5 میں سے 3 دے لیے تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو. لیکن دیکھیے ججز پہ مجھے یہ بتایا جائے کہ کون سا طریقہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو فوجی ہے تو اس کے دیکھیں یہ کورٹ مارشل کا کیس نہیں ہے. کورٹ مارشل کا کیس اگر ہوتا تو یہ کورٹ مارشل جو نا اس سے پہلے بھی کبھی ہم سنا جاتا ہے کہ کورٹ مارشل یہ آئین کی خلاف ورزی کا کیس ہے, اور اس کو غداری اسی معنوں میں کہتے ہیں کہ آئین کو وائلیٹ کیا گیا. اگر فوج کا کیس ہے تو فوج کے کتنے کیس ہوئے ہیں جس کو عدلیہ نے کبھی سنا ہی نہیں؟ ایک نہیں 20 کیس ہے جو لوگ اپنا کیس کورٹ مارشل سے لے کر سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ سول عدالت سے لے کر فوج کے پاس چلے جائیں. یہ بدنام کرنے والی بات ہے فوج کو, جن کا خیال ہے تو سپریم کورٹ بھی گئے ہیں میرے بھائی, ہم تو سپریم کورٹ بھی گئے ہیں. بات یہ کہ ہم نے جب ان سے نظر ثانی کی اپیل دائر کی تو آپ بتائیں کہ نواز شریف کا مقدمہ 9 سال بعد انہوں نے بلا کے کھلا, تو ہمارے مقدمے میں کیا پرابلم ہے کہ 2009 اور اب 2014 شروع ہوا, کیا پرابلم ہے اگر اس کو کھول لیتے؟ تو ہم تو سپریم کورٹ گئے, اب پھر گئے ہوئے ہیں, اب پھر ہم نے سپریم کورٹ میں وہ اپیل دائر کی, وہ بھی پرسوں ریجیکٹ کر دی گئی جب ہم نے اس عدالت کے متعلق. تو بات یہ نہیں کرنا چاہتا, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مقدمہ ہمارے آئین کے مطابق ایک ایسی عدالت سنے گی جیسی تشکیل پائی ہے. اب ان کے ججوں پہ آپ کو اعتراض ہے تو دوسری بات ہے, پھر اس کے بعد آپ کو سپریم کورٹ کا رستہ بھی کھلا ہے, وہاں بھی جا سکتے ہیں, پھر اس پر نظر ثانی کی اپیل بھی کر سکتے ہیں. بہت سے رستے کھلے ہیں. لیکن مشرف اچھا کوئی بھی شریف آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اسے غدار کہا جائے, اور وہ بھی نہیں چاہتے ہوں گے اسے غدار قرار دیا جائے. یہ بات انہوں نے جو کی ہے نا, اس پہ بھی ہم دیکھیں مطلب غدار کیسے ہو جائے. دیکھیں نا مطلب یہ کہ لفظ بار بار یہ غدار غداری غدار, آئین میں لکھا ہوا نا اس کا بھائی میرا بات تو یہ ہے کہ آئین چینج کروائیں. آئین تو دیکھیں نا اتنے سال وہ حکمران رہے, اس آئین کی شک پر کسی کو اعتراض نہیں رہا. ضیاء الحق کا دور گزر گیا, کسی کو ہائی سیزن کے لفظ پر بڑی یعنی کہ بڑے اعلیٰ درجے کی غداری آپ سمجھ لیں, اس پہ کسی کو اعتراض نہیں رہا. اب اگر چل شجاعت صاحب یہ نقطہ لے کر آئے ہیں کہ آپ غدار یہ اس معنوں میں نہیں ہے کہ لڑتے ہوئے فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے کہ دشمن کی فوج کے ساتھ مل گئے تھے, تو کچھ دن کے مانوں میں غداری یہ بھی آئین کی بات کرتے ہیں نا, آئین کی بات کر رہے ہیں نا. اب حکومت پاکستان طالبان سے مذاکرات کر رہی ہے, تو آج مولانا عبدالعزیز صاحب نے کیا کہا ہے کہ اگر پاکستان کے آئین کے مطابق مذاکرات کرنے ہیں تو ہم نہیں کرتے. تو کیا آپ جو آئین کو مانتے ہی نہیں آپ ان کے ساتھ جا کے مذاکرات کر رہے ہیں, اور جس نے اس ملک کے آئین کو مضبوط کیا آپ اپنے آپ کو کیٹیگری میں کر لیں. کیٹیگری کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کی انٹینشن کی بات کر رہے ہیں. ٹریٹ کریں گے یہاں تو آپ مان لیں کہ آپ آئین پاکستان کو نہیں مانتے. نہیں ہم تو مانتے ہیں جو کچھ کیا. دیکھیں چیف جسٹس افتخار صاحب نے, میری بات سن لیں, میری بات سنیں, یہی چیف جسٹس افتخار صاحب نے 1999 کو جب کو ہوا تھا اس کے بعد جب انہوں نے فیصلہ دیا تو انہوں نے 3 سال کے لیے انہی حکمران کو کہا کہ آپ 3 سال تک آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں.
یعنی یہاں تک ایک طرف آپ اختیار دیتے ہیں کہ آپ 3 سال تک آئین میں تبدیل کریں، اور بعد میں پھر آپ کو جب ریلائز ہوتا ہے کہ 3 نومبر 2007 میں جو اقدام ہے اس میں آپ خود افیکٹی ہو گئے، پہلے میں آپ بینیفیشری تھے، اس میں آپ افیکٹی ہو گئے، تو پھر اس کے لیے انہوں نے کہا جی ان پہ بغاوت کا مقدمہ چلا دیا جائے، آرٹیکل 6 لگا دیا جائے۔ ایک طرف آئین تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، ایک طرف آئین امینڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی آئین معطل کیوں کر دیا۔ تو اس وقت کے جو بندے تھے ان کو بھی لے کے آئے کہ کیوں 3 سال کے لیے ان کو اجازت دی آئین چینج کرنے کی۔ یہ میر صاحب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 12 اکتوبر سے شروع کرنا چاہیے تھا۔ اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں، میرا بھی یہی خواہش ہے اس وقت شروع کیا جائے۔ اچھا اب لیکن اس وقت یہ دوسرا مقدمہ چلا لیں گے ہم، فی الحال تو یہ 3 نومبر والا جواب دے دیں، یہ بچ جائیں گے تو پھر یہ یہاں اگر فیصلہ ہو جائے گا تو پھر ہم ایک بڑے مقدمے بھی سوچیں گے۔ بندہ تو ایک ہی ہے اور اقدام بھی ایک ہی ہے، تو آپ اس کو ایسا مقدمے میں الجھا رہے ہیں جس سے اور دوسرے بچ جائے اور وہ پھنس جائے۔ پرویز مشرف صاحب خود چھوٹنا چاہتے ہیں، دوسروں کو پھنسانا چاہتے ہیں، ان کی بات یہ نہیں ہے، بات آئین کی بات کر رہے ہیں نا میرے بھائی، آئین کی بات کر رہے ہیں، تو آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے والا، اس کا ساتھ دینے والا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والا، وہ تمام لوگ ایکولی مجرم ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کی ہم بات کرتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے، ہم کسی اور آئین کی بات نہیں کرتے۔ اگر آئین ماننا ہے تو اس کو ٹرو اسپرٹ میں مانے، جو لکھا صرف اس میں سے ایک سک اٹھا کے ایک بندے کو آپ سزا نہ دیں، ساری چیزوں کو آپ امپلیمنٹ کریں۔ یہ میر صاحب کیا پھر ہم یہ سمجھیں کہ پھر ڈیفینس آخر میں آ کر یہی ہے کہ باقی سب کو بھی پھنسا دو؟ مطلب میں تو ہوں باقیوں کو پھنسا دو، بھائی اپنی صفائی تو پیش کرو نا پہلے آپ۔ اچھا اب بیٹ کرنا اور ہے، ایگزیکیوشن کرنا کہ اور بات ہے۔ ہمارے سامنے ایک جج صاحب آ کے اس کی تشریح کر چکے تھے کہ دونوں میں کیا فرق ہے اور آئین کے الفاظ کیا ہیں۔ میں قانونی بحث سے موجودہ نہیں چاہتا، میں قانون دان تو ہوں نہیں، میں تو اتنی بات کہتا ہوں کہ اس بارے میں انہوں نے خود کہا تھا کہ میں نے آج تک آئین کبھی نہیں توڑا سوائے 3 نومبر کے فیصلے کے۔ مشرف از آن ریکارڈ، مشرف از آن ریکارڈ، صرف 3 نومبر کے فیصلے کے میں نے آئین کبھی نہیں توڑا۔ اگر وہ اس کو آئین توڑنے کی بات خود اعتراف کر چکے ہیں، آن ریکارڈ موجود ہے، ٹیپ موجود ہے، فوٹیج نکال دیجئے، لوگوں کو سنا دیجئے، اگر یہ ساری باتیں موجود ہیں تو وہ آ کے دفاع کریں کہ جو دوسرا ان کا دفاع ہے کہ بھئی جب ملک اور آئین کا مسئلہ ہو تو ملک پرائر ہوتا ہے، آئین پرائر نہیں ہوتا، آئین توڑا جا سکتا ہے ملک بچانے کے لیے۔ وہ انہوں نے ایک ہی اس کی ایک توضیح پیش کی تھی، اس کے تحت دفاع کر سکتے تو کریں۔ یہ کیا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چھوٹے چھوٹے ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ڈھونڈ رہے ہیں جناب؟ ویسے مجھے دفاع کر لیں نہیں، میرے تو افسوس ہے کہ آپ نے ان کو تجزیہ نگار کے طور پہ بلایا۔ یہ تو سنگل آؤٹ یعنی ایک پرویز مشرف کے ساتھ جو ڈائریکٹ اٹیک کی بات کر رہے ہیں، آپ تو تجزیہ کریں گے سجاد صاحب، آپ صرف اور صرف ایک آدمی کو سزا دلوانے پہ آپ بزد ہوئے، آپ کوئی جنرلی باقیوں کی بھی بات کریں۔ آپ ان کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ ادھر کی بات بھی کریں ادھر کی بات بھی کریں، اپنے آپ کو غیر جاندار ثابت۔ ارے غیر جانبداری خدا نہ خواستہ آپ نے کہیں یہ تو نہیں سمجھ لیا کہ میں کوئی اس معنوں میں غیر جانبدار ہوں جس معنوں میں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بڑا آبجیکٹو آدمی ہے، بڑا آبجیکٹو آدمی۔ آبجیکٹیوٹی کچھ نہیں ہوتی، اگر آپ کا ذہن کلیئر ہے تو آپ کو وہی بات کہنی ہے۔ 2 باتوں کہنے والا، 2 کشتیوں میں پاؤں رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں تو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو دلائل آپ دے رہے ہیں، دلائل یہ دلیل بنتی ہے۔ ان کا پوائنٹ بہت اچھا ہے، ان کا پوائنٹ بہت اچھا ہے کہ آئین کی پاسداری کرنی چاہیے، آئین توڑنے والے کو سزا دیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہلے رگڑیں، ان کو پوچھیں، باقیوں کو چھوڑ دیں۔ مطلب 1999 کو چھوڑ دیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ان کو رگڑیں، وہ کہہ رہے ہیں بعد میں دیکھا جائے، وہ کہتے نہیں بعد کی بات ہے۔ اور یہ مجرم ثابت ہو تو دوسرے مجرم ثابت ہوتے ہیں، اگر یہ مجرم ثابت نہ ہو تو کوئی مجرم ثابت نہیں ہوتا۔ یہ بات نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 بندے مل کے چوری کریں تو آپ ایک کو پکڑ لیں۔ نہیں، اگر 7 آدمی مل کے کوئی پلان کرتے ہیں اور وہ ایک چوری کرتے ہیں تو آپ ایک کو پکڑ کے کہیں کہ یہ مان گیا تو 6 کو ہم بعد میں رکھ دیں گے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ جیسے پکڑے یا جیسے پکڑے مجھے کو ختم کرنا ہے۔ دیکھیں بھائی، اگر آئین کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، سزا دینی ہے، آپ نے کیس لڑنا، سب کی بات کریں، ایک بندے کو نشانہ مت بنائیں، یہی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ جہاں تک یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مشورہ ہوا، لیکن ایک آرمی چیف کے طور پر ایمرجنسی لگانے کا مشورہ ہم نے نہیں دیا۔ ٹھیک، میر صاحب بہت بہت شکریہ، اینڈ ڈاکٹر امجد تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن دا شو۔ آخر کو آ کے پھر وہیں پر بات ٹھہر گئی ہے، انتظار دوبارہ نیکسٹ پیشی کا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا پرویز مشرف جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بات سے نہیں ڈرتے، اپنا ڈر سائڈ پر رکھ کر آ جائیں گے عدالت میں یا نہیں آئیں گے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔